Khawaja, and the topic of his talk is designing resilient data centers, electrical and mechanical infrastructures for high availability. मैं थोड़ा सा लाउड बोलता हूँ तो मैं माइक से थोड़ा पीछे होके बोलूँ। होता है कि बहुत सी प्रेजेंटेशन है, सारी टेक्निकल प्रेजेंटेशन चल रही है, तो पीछे से बैठा मुझे कई दफ़ा उन्होंने कहा आगे आके बैठे, तो मैं नॉर्मली प्रेजेंटेशन कहीं करती हूँ तो मैं पीछे ज़रूर इसलिए बैठता हूँ, मैं देखता हूँ कि ऑडियंस क्या कर रहे हैं और कुछ उनके काम की बात हो भी रही है कि नहीं। सो मिला जुला सा रुझान है और मुझे यहाँ बैठे था दो चीज़ें सोच रहा था कि मुझे पता लगा कि आप जूम पे भी कर सकते हैं, बट आई वाज इन कराची एंड आई वाज प्रेफर्ड कि मैं यहाँ पे आकर कुछ बात करूँ। थैंक यू वेरी मच टू गिवन दैट सच अपॉर्चुनिटी। बिफोर वी गोइंग टू द टॉपिक, सिंपल क्वेश्चन, डेटा सेंटर से फेमिलियर है आप लोग? कितने लोग फेमिलियर हैं डेटा सेंटर? चलिए, डेटा सेंटर की बहुत बात आजकल होती है। अभी हम जितने टॉपिक देखते थे जिसमें एआई की, मशीन लर्निंग की, कंप्यूट की, डेटा की बात हो रही है, और अभी जो डॉक्टर साहब प्रेजेंट करी थी जो कि एक लाइव एग्जांपल थी जहां एआई को इस्तेमाल किया गया है। ये सारी डिस्कशन आजकल बहुत ज़्यादा है और एआई को आम इस्तेमाल में लोग कर रहे हैं, कुछ जानते हुए कुछ ना जानते हुए। जैसे अब चैट जीपीटी से सारे वाकिफ हैं और फिर पिछले दिनों में लोगों ने डीप सी का नाम सुना तो उन्हें और पता लगा कि ये भी ट्रेन मॉडल अवेलेबल है। बिफोर हम इस टॉपिक पे जाए मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूं कि ये जो एआई है ये हमारे सारों की लाइफ में इस्तेमाल हो रही है, पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही थी। इसमें क्या नई बात है? नई बात यह है कि लार्ज स्केल ऑफ डेटा है जिसके मॉडल्स को आज हम ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेन करके हमसे ही जनरेटेड डेटा को फिर हमारे इस्तेमाल के लिए बनाया जा रहा है। सो आप और हम यहाँ जो बैठे हैं हम हर सेकंड के ऊपर डेटा जनरेट कर रहे हैं। वो डेटा जो आप अपने फ़ोन पे एक क्लिक करते हैं वो किसी नंबर में लाने के लिए वो एक डेटा जनरेट कर रहे हैं, आप एक मैसेज करते हैं वो डेटा जनरेट कर रहा है, आप एटीएम के पास जाते हैं अपने पैसे निकालने के लिए वहाँ भी आप डेटा जनरेट कर रहे हैं। अभी आप कमर्शियल यूज से हट के पर्सनल यूज पे भी देखें तो हर सेकंड के अंदर हम डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो ये डेटा जो है बेसिकली ये प्रोड्यूस हो रहा है, फिर ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है और कहीं जाकर ये स्टोर हो रहा है और फिर उस स्टोर होने के बाद हम उसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस स्टोर होते जाता है और दोबारा इस्तेमाल होने का ये जो जगह है जहाँ पर ये होता है वो डेटा सेंटर कहलाता है। On the simplified form, this is the place where you host your compute and storage and network equipment in there. So it's a place which is keeping all these equipment where all your data go, stored, processed, and then you reuse that. So जो बात हम कर रहे थे, which was we were talking about, so I will use the mixed language. तो वो लोग जो आसानी से उर्दू ज़बान समझ सकते हैं वो भी बात समझ जाएं और जो हमारे लर्नर प्रोफेसर यहाँ बैठे हैं उनके लिए भी कुछ कंटेंट इस तरह का हो कि they can understand more than that. So these are actually global trends. Just we have given you a brief that what is happening right now. So it's the urbanization. What we are facing right now, urbanization is actually exploding everywhere. So it's been there that by 2050, about 70% is going to be the urban area, which was reversed in the past. And similarly, we people are facing similar trend in Pakistan. The people who are living in Karachi and people who are living in Lahore, now even in Multan and Pindi, they are facing that their peripheries are eroding and becoming the cities again. So it's the big phenomena, which is people coming to the cities, and obviously then they require resources, and the most common resource is the electricity. So we come into that later. Then the digitization. It's the digital era. And I already have explained, so I'm not going into the detail that we are producing data every time. Everything is going to be digital. Paper are eroding from our lives. So we are on the phones, we are on the machines, and even without touching now by a voice we are converting the data. The most then challenges leading to these trends is from urbanization to digitization. The sustainability is now the biggest channel for the society because we are increasing in the population, increasing the infrastructures, and obviously the needs of people are increasing again. But we have limited resources. On the other hand, we have natural resources limitation. The second part is that using those resources, they are not abundant,
then there are implications for that. So sustainability is also the biggest challenge. So these trends, why I'm talking about these trends, this will lead to transform where we're taking the topic to the data center and to make a resilient data center. Not going into each point, right now as I already explained on the data center side, so people who are somehow linked to the data center, they call all experiencing people are talking about co-location. Co-location is a place where multiple users can place their equipment rather than to own a place. Then cloud and hypercompute, this is the time, because when we are talking about large data, processing that large data, AI, all that, so we are using high performance computing. It is actually dominating right now in the data center market. That means the data centers needs are more than ever. Data centers have been there since 90s, but from the last, after 2010, it become more important, and today it's become essential part. And it's been, demand is increasing. Hyperscale data center, from small to hyperscale data center, so going over there. HPC, large language models, actually put pressure on the infrastructure of the data center. Before than that, a data center, actually look at the fuel of the data center. Data center fuel is electricity, because all of the compute, storage, networks, even cooling units, their input is electricity. Initially, if you have seen a data center, if you enter into the data center, you will find out that there are racks. Racks are like cabinets, where you put your IT equipment, your server, storage, and network equipment. And then they are fueled by the electricity. Previously, when we are making a data center, our first place is to organize the data center and place our equipment in there. Now, the other challenge is, when you use electricity, it has also have waste. Whenever there is a form of energy change, we know that heat being released. So the equation is that if we use 1 kilowatt of energy, it actually releases 1 kilowatt of heat. So when we are making a data center, there are two challenges. One, obviously we require input, which is the electricity. Now this input is converted into heat. So we have to remove that heat from the data center. To removing that heat from data center, we require cooling unit, which is a mechanical form of equipment which have to be placed there. We can say that heat removal unit, और आम आदमी के लिए एयर कंडीशनर जो इस्तेमाल किए जाते हैं. एयर कंडीशनर से सारे बहुत familiar हैं. डेटा सेंटर की एयर कंडीशनिंग थोड़ी सी उससे डिफरेंट है, पर पर्पस वही है that we are moving heat from one place to another place. So generally we will not cool down actually areas. Actually we remove heat from one area to other areas. So these are actually, you can use heat pump, we can use refrigeration, but most of the time it's a mechanical system we are using it. Past में जो data center की कैबिनेट थी, उसकी पावर कंजम्पशन 2 से 3 किलोवाट थी. इसका मतलब अगर हम 40 रैक, 50 रैक, इवन 100 रैक का डेटा सेंटर बनाने जाते थे, तो आप उसको 300-400 किलोवाट की एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होता है. अब ये फिनोमेना चेंज हो गया. अब एक रैक, ये जो हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, AI की बात कर रहे हैं, अब हम मल्टीपल प्रोसेसर एक वक्त पे इस्तेमाल करें और एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, उसके फ्यूल में उतनी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो अब एक रैक जो है वो 30 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट तक जा रहा है. अब जब 30 किलोवाट से 100 किलोवाट तक एक रैक जा रहा है, तो आप डेटा सेंटर की एनर्जी डिमांड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो कितनी चेंज हो गई है. और इसी ने उसके जो डिजाइन का एलिमेंट है उसको भी बदल दिया है. अभी हम आगे आपको डिजाइन के ब्रीफ एलिमेंट्स दिखाएंगे. मैं क्विकली उसको जस्ट मैं प्रीएम्बल इसलिए बिल्ड कर रहा हूँ कि आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे. जब हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमें दो चीज़ों पे इतना एम्फेसिस देते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये लैंडस्केप चेंज हो कि अब ये मेरी एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है. दूसरी तरफ मुझे डेटा सेंटर बहुत हाईली अवेलेबल चाहिए. अब ये मेरे दोनों कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जेक्टिव. एनर्जी डिमांड है 10% डेटा सेंटर्स अब जो पुराने डिजाइन थे आज उससे 10% ज़्यादा एनर्जी डिमांड करके उसके ऊपर इस्तेमाल करें. 2025 तक जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड है उसका 2% डेटा सेंटर, जो ग्लोबल डेटा सेंटर है वो 2% टोटल एनर्जी डिमांड इस्तेमाल करें. और ये हमें ख्याल रखते हैं कि ये जिस स्पीड से बढ़ रही है 2030 तक ये 4% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोड्यूस एनर्जी जो है वो डेटा सेंटर में इस्तेमाल
पाकिस्तान की तरफ अगर हमारे हम बाकी चीज़ों को छोड़ते हैं, इम्पॉर्टेंट ये कि पाकिस्तान राइट नाउ ऑप्टिंग डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने किया है जहाँ पे वो डिजिटाइजेशन को ऑप्ट कर रहे हैं, और आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट वो अनाउंस कर रहे हैं, कुछ लोगों को नजर आ रहे हैं, कुछ बेसिकली बैक एंड पे हो रहे हैं। स्टेट बैंक, सो बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी पॉलिसीज और ये सारी चीजें इसमें आ गई। मैं कुछ इन चीजों को स्किप करता हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि डेटा सेंटर की 4 लेयर्स होती हैं, देयर 4 layers. We are focusing on the last one, which is the layer 1, जो critical physical infrastructure है, because जितने भी आप rated 1 highly available data center, TIA942, Uptime Institute, EN5600 standard सुनते हैं, ये सारे के सारे layer 1 के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो लेयर 1 हाईली अवेलेबल है क्योंकि ये सिस्टम अवेलेबल होगा तो सारा डेटा सेंटर चलेगा, कंप्यूट चलेगा, नेटवर्क चलेगा। अगर बैकबोन अवेलेबल नहीं है तो जितनी अवेलेबिलिटी और जितनी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट के आउटपुट वगैरह देना चाहते हैं वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इन चीज़ों को हमने कर दिया। जस्ट 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें डेटा सेंटर की अवेलेबिलिटी में, जो रिस्क के अंदर जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखिए आज भी डेटा सेंटर के लिए वो पावर आउटेजेस है, और दूसरा बड़ा फैक्टर जो है ह्यूमन एरर को निकालते हैं अगर हम, तो वो बेसिकली कूलिंग। और ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दे हैज टू बी हाईली अवेलेबल टू रन योर डिजिटल वर्ल्ड। These are the standards which globally been followed. These are actually given the guidelines for data center high availability. और टीयर का नाम अक्सर जो डेटा सेंटर से लोग अवेलेबल है, अपटाइम इंस्टीट्यूट की वजह से अवेलेबल है। सो हाईएस्ट इज द 4, और 4 की जो 0.4 आवर्स का मतलब है, तो बाद 24 मिनट का डेटा सेंटर का अभी भी इतने सारे डिजाइन को रिन्यू करने के बाद 24 मिनट का साल के अंदर डाउन टाइम, प्लान डाउन टाइम एक्सपेक्ट किया जाता है। These are the 4 common areas. Electrical, mechanical is our focus. We are this telecom and architecture is not our focus of the presentation today. Data centers, जो future ready data centers हैं, quickly, obviously we require modular, reliable, resilient, available, and actually most part of that they have to be very resilient on the cooling infrastructure and to the power infrastructure, because this is the backbone, and all standards are talking about power and cooling, and other are talking about other 4 things. So this is the dated point design. When you have actually a thing, we are not focusing on the other areas, we are just highlighting the complete design. If you coming from the source, so it's a backup, and UPS to your ICT equipment and mechanical equipment, we have only one path available in the design, and there is no redundancy. That means this data center is rated as rated 1, which is about have a planned time of 25 hours in a year. So this is the basic level that it can be used for those people who are not relying much on the IT, and which is right now no people are doing that, but still this design will work like that. Most important part is this is tier 2, where we have some redundancy available on the electrical parts side, that we have on the UPS side redundancy. We always have backup power supplies which are redundant in there. Standards in power infrastructure of the data centers, they take utility failure is a no failure. So that's why they must focus on the energy on the ground. So that's why if you look at that, backup supplies or generators are the most common part of the design. So they are relying on to that, and that means from utility supply, if they being failed, it's not considered to be the failure. The failure of the UPS considered to be the failure. A failure of a cooling unit considered to be a failure. This is the tier 3 architecture or rated 3, which is commonly be used in all the businesses which their revenue streams are more on to the data center or digitized, which is most of banks, telcos, hospitals, universities. So they go for this design. Here the important thing you look at that every distribution path has 2 elements and have built-in redundancy. So all critical equipment is fed by 2 paths, and it's called concurrent maintainable. That means that if you have to do a planned maintenance, or you have a failure in a equipment and you want to change, so you have a complete alternate path available. It can be feed from either path A or path B, so you can put down one complete path out. Either it's a capacity component or it's a distributed component. That means that if a UPS fails, it has a UPS on the backup. If the circuit breaker fails, it has another path available to supply your mechanical and ICT equipment. There are some non-critical loads which we don't bother to have N+1 redundancy, but for all critical equipment, which is electrical and mechanical,
supports a complete infrastructure. And similar goes for the utility power supplies. We are talking about, we can have one transformer in the rated 3 design, but all will be, as I told you, that for utility they don't rely on the utility much, so they want some generation on the ground, because data center has to be 365 24/7, so 7 days a week. So एक दफा जब data center on हो गया तो फिर उसको बंद नहीं होगा. And the highest is the level 4. It is called fault tolerant. So now it's a 2-in-1 solution. That means every capacity component have an equivalent capacity component available as redundancy. So everything goes at one part. Failure will not impact any your mechanical or electrical equipment. That means your server, your network, your storage. And why I'm focusing on mechanical equipment? Because to run these units, you always to have cooling being present on there. Densities बढ़ गई हैं, इनके designs और उसमें change हो गया. We're not going into that today, because they have given me that I have 1 minute left, so I'll summarize that. These are just high-level electrical design, so I'm not going into detail. I was the idea that I go into the practical output, that how these can be designed for data centers. So these are SLD designs, which are people are sitting over here and from engineering side can understand more into that. This is for a cooling architecture. It is a rated 3 design showing redundancy at each level. If you look at, if you can, it is visible to you, you can find out multiple walls, which is can isolate from one side, then equipment can be isolated from the other side as well. These pictures, that's how a complete data center infrastructure being designed. Thank you very much. I'm not sure that I've been able to contribute anything for that, because the topic was long and the things been there. But thank you very much for keep listening.